Saw the English squad, as in rather the Indian squad going to England. Yes, I India's most inexperienced, possibly, or least experienced team in the last 8 to 10 years. least experienced team with a captain who has a very bad. I'm using the word bad because I mean there's no other record overseas. Very bad record overseas. He is not. I don't know captain बना रहे हैं उसको, but I'm not even sure कि उसका बैटिंग रिकॉर्ड ठीक है तो उसको एज अ बैटर भी लेके जाते तो थोड़ा सा he could have been groomed into. I and we had another option which was good, but I don't know what was the thinking behind it. Clearly, I never thought KL Rahul was an option. I never thought Gill was an option. Pant tha, the Bumrah was, according to me, number one contender, but he sort of, I don't know now whether he wants to prolong his career. So he's saying, "नहीं मैं 3 मैच से ज़्यादा नहीं खेल पाऊंगा." And then I say, okay, fair enough. If a senior player is saying he's there, his experience is there to be used, but ideally he should have been the captain. Now, if he's not the captain, I would have definitely gone for a punt with his, you know, his batting record, his keeping is good, and his, game presence in a test match, what to do, he knows. I mean, we know that he knows. He's already there in the middle of things because he's a keeper. Gill अभी तक एक अच्छा टेस्ट बैट्समैन ही नहीं बन पाया है तो उसको सीधा कैप्टन बना देना इज आई थिंक इट्स अ बिग गैम्बल. ये एक बीसीसीआई आई मीन ये सिलेक्शन टीम ने एक गैम्बल किया हुआ है कि चल गया तो तुक्का, नहीं चला तो फिर जैसे वो इट्स अ वेरी सैड थिंग जैसे वो पाकिस्तान टीम वाले बोलते हैं ना कि यार वी विल लर्न फ्रॉम इट. तो अभी वो लर्न करेंगे अभी. नहीं, अल्लाह ने विन है तो विन है, नहीं तो लर्न है. अब देखते हैं क्या होता है. आई एग्री, आई कुडंट एग्री मोर. आई थिंक स्क्वाड पे मेरा एक दो पोजीशंस लेके और ज्यादा कोई व्यू पॉइंट नहीं है. नॉट दैट इंडिया India's test teams has too many cards left. I think with the back-to-back retirements of Ashwin, Kohli and Rohit, and Jadeja also on the last leg of his career, and I feel that सबसे मुश्किल काम उसको replace करना होगा. One of the most underrated players recently was played for India, but I'm assuming Bumrah is on board with the fact कि उसको captain नहीं बनना है. I hope he's on board. Otherwise, it's a ridiculous decision. Assuming that Bumrah is on board, I also agree with you that exact flip होना चाहिए था. Pant should have been the captain and Shubman Gill should have been groomed to be vice captain. उससे क्या होता? Pant को भी एक motivation मिलता. He seems to be low these days. Seems to not enjoy the confidence of Gautam Gambhir, and could in crunch situations have made him more responsible. And I think he would have really been able to express himself as well as he does. But lately he's been lying low. So I think wo, like you mentioned, pura flip hona tha. I think what they've gone for is long term youth. 10 साल तक कैप्टन रह सकता है, 8 साल तक रह सकता है. बट सी ये कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि किसी को 8 साल कैप्टन रहना ही है. Now what is going to happen as a result if he doesn't work out, maybe in the England tour, आप उसको ड्रॉप भी नहीं कर सकते हो. Basically, this entire none because the World Test Championship has begun in Test matches also. अभी वो cyclical हो गया है, World Cup to World Cup. Similarly, it is WTC cycle to WTC cycle. Yeah, so you're right. I mean that नहीं है. I can understand that and I can see also कि वही कोशिश है, but that's a very safe approach कि यार ऐसा करो, अगर किसी को कैप्टन बनाओगे एक साइकिल के लिए ना, by the end of 3 years वो अच्छा कैप्टन बन ही जाएगा. अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कि गिल इज आई एम नॉट सेइंग गिल इज not good enough or whatever. ऐसा नहीं है. Nobody's groomed him yet, but this will groom him, but that is at the cost of our matches. वो 3 मैच हारेगा, we're not again going for a final. Exactly. He will lose a couple of series, learn from it. Then he will, by the end of the cycle, he'll be a great captain. Yeah.
But I mean, why do that? Why do that to the cricket? Why do that to Indian cricket for the sake of, या तो उसको पूरा सिखा के लेके आओ ताकि वो from the word, but वो हुआ नहीं है. We've seen him play overseas. He's not scored runs also as a batsman. Captain की तो बात ही छोड़ो, वो तो अब पता चलेगा. And therefore I say that this is a gamble. Even though I'm sure in the selector's mind exactly what you are saying is what's going on, कि हम long term सोचेंगे, धीरे धीरे करके बन जाएगा. It's like in Bollywood, they एक star kid को बनाते रहो, flop, finally वो hit हो ही जाएगा, क्योंकि वो, but ये थोड़ी ना हमारे बच्चे हैं, why are we giving these guys that kind of and especially where you have the option. I can understand एक साथ senior players have gone out and अभी एक hollow हो गया है, but you have Pant, and this is a good option. Also, I think ये, like Nasir Hussain said on a podcast with Michael Atherton that don't underestimate. This is a good Indian squad, and I maintain that. I mean, you have a Jadeja with 80 plus tests. You have a Rahul with 50 plus tests. You have a Bumrah with 40 plus tests. You have a Yashasvi, Shubman, Washington. These are all 15, 20 plus. Iswaran is going to be there in the top of the order, and he's also not what. Iswaran version, good local Ranji experience. बहुत experience है उसको. Yeah. ऐसा नहीं कि fresh है. So ये squad बुरा नहीं है. Siraj 30 plus tests. These are all मतलब established हैं. इतने टेस्ट मैचेस कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में खेलते हैं. और ओवरसीज भी खेल चुका है, ऐसा नहीं कि खाली रणजी खेला है, तो has that also experience. So स्क्वाड का इश्यू नहीं है. दिक्कत यही है कि आई थिंक जब आपका खुद का ही कोई फॉर्म नहीं है ओवरसीज, और इंग्लैंड तो टफ कंट्री है टू टूर, तो आप क्या इससे कॉन्फिडेंस एंजॉय करोगे अपनी टीम का? सी वन कैन आर्ग्यू कि लास्ट 2-3 टेस्ट सीरीज में रोहित का भी नहीं था, बट रोहित हैज ऑलरेडी अचीव्ड सो मच, तो वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करता था, वो नेचुरल कैप्टन था. शुभमन गिल, आई डोंट नो इफ ही इज नेचुरली अ लीडर. No, he's not. पॉसिबल. And like you said, this is England. England की conditions easy नहीं है. अगर आपको try out करना था, और या तो आप किसी lower team के साथ होते, one of the Asian countries or West Indies या ऐसा कोई जहाँ पे आप ज्यादा competitive हो सकते हो. England में conditions ऐसी है जहाँ पे definitely they will have an advantage. Yeah. अब उस conditions में moving ball, the temperatures, the way they drop and all, we are not used to that. Our players are not used to. You can say कि नहीं ये तो है, खेल लेंगे, कर लेंगे, नहीं कर लेंगे. Difficult है. बड़े बड़ों को देखा है हमने इंग्लैंड में जाके, perform. टेस्ट रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा नहीं है. Absolutely. Everybody has struggled. So ऐसा नहीं है. You could have done this if it was a smaller team. अब ठीक है, आज वो दिन तो नहीं रहे कि हम केन्या के साथ खेले, but we could have done that with somebody like a West Indies. कि जाओ गिल को भेजो कैप्टन बना के, वो जीत के भी आ जाता और उसको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता. अब तो हर टेस्ट मैच कंट्रीब्यूट्स टू योर रैंकिंग ना, टू द WTC. और पहले जैसे नहीं है कि कुछ भी हार जाओ तो चलेगा. करेक्ट. सी आई थिंक द 11 सीम्स टू बी सॉर्टेड. आई थिंक ये लोग जायसवाल और राहुल से ओपन कराएंगे. साई सुदर्शन 1 डाउन, 2 डाउन राहुल, 3 डाउन नायर एंड पंत 6 हो गए. आपके जडेजा 7. या तो रेडी होगा या वॉशिंगटन सुंदर होगा, डिपेंडिंग ऑन द पिच, एंड देन 3 फास्ट बॉलर्स, Bumrah, Akashdeep and Siraj, and depending on which match Bumrah chooses not to play, maybe Prasidh Krishna will come in or Arshdeep Singh will come in. So ये 11 sorted है actually. Squad पे ज़्यादा कोई discussion है. Only I feel what's wrong possibly Shreyas Iyer को ढंग से treat नहीं किया गया. I don't know if it's a bias Gautam Gambhir has, but actually Shreyas Iyer जितने भी 5-10 टेस्ट मैच खेला है, उसका एवरेज और शुभमन गिल के एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है. तो आप तो उसको कैप्टन बनाना तो छोड़ो. ओवरसीज नहीं है ना, ओवरसीज रिकॉर्ड नहीं है ना उसका. वो तो गिल का भी नहीं है. दैट है. वो मैच टीम में तो लो, आपने टीम में भी नहीं लिया है. But see, then Vishal, what happens is, see, you forgot to mention Iswaran. Now these are all technically they are all opening batters. But problem ये सारे opening batters हैं. That's what I'm saying. These are all opening batters. So तो फिर कहाँ पे कितना या तो बैटर है नहीं ना, वो तो मिडिल ऑर्डर है. मिडिल ऑर्डर में इतने लोग लेके नहीं गए हैं लोग. See, my point is, आपने सरफराज को भी बिना मैच खेले गिरा दिया. Drop सरफराज if he is not good enough. But आपने क्या देखो, लास्ट टेस्ट सीरीज वो खेला वो इंडिया इंग्लैंड में,
उसमें वो अच्छा खेला, फिर बांग्लादेश में या न्यूजीलैंड वाले में वो फ्लॉप हुआ, फेयर इनफ। बट आप उसको फिर भी ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच नहीं खिलाया और आपने उसको बिठा दिया, तो आपको बिठाने का लॉजिक क्या था जब आपने उसको खिलाया नहीं? फेयर इनफ, मैं ये मान सकता हूँ कि भाई श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में, तो उसको लाते हैं उसके अगेंस्ट, तो आपने वो भी नहीं किया। सो माई ओनली, आई एम लाइक आई सेड, आई थिंक आई एम मोर और लेस ऑन बोर्ड विद द स्क्वाड. I think they haven't clarified, but I think Shami has been dropped and not picked, or maybe his fitness levels are not up to the mark. I don't have any problem with the squad, barring Shreyas Iyer. I think that's a miss. But my issue, like I said, and like you also said, is this should have been a flip with Pant as captain, Shubman and vice captain. Also, when the two matches or the one match which Bumrah does not play, are we then, I don't know, are we then saying that अच्छा ठीक है वो एक या दो मैचेस हम हारेंगे ही? Because the way it seems, you can't replace Bumrah for sure. But both, that's the reality you have to live with. I think you have to, Prasidh Krishna, Arshdeep और आकाशदीप, इन तीनों को, I'm assuming Siraj is a constant. अब इन तीनों को बकअप करना पड़ेगा, and Lord Shardul is back, so hopefully उसका golden arm कुछ करेगा हमारे लिए. We have, I think we mustn't forget that हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज बिना बुमराह के भी जीती थी. Natarajan and Thakur and Navdeep Saini, these were your bowlers, boss. तुम ये तीन बॉलर के साथ वो सीरीज जीत के आए हो. So I'm saying उससे तो बेटर ही लाइनअप है. I'm actually looking forward to seeing Arshdeep in England. No, the conditions will help him. He is that sort of a, I mean, seam up bowler hai, so he will definitely give. मैच के लिए कितने टेस्टेड है, I don't know. That is, fitness will come into play because 5 दिनों तक खेलना, especially if you are going to bowl first, you never know for how many days you might be bowling. And India 6 फास्ट बॉलर लेके गई है. They have to keep rotating them. As simple as that. I don't think it's just about Bumrah. I also feel last test match में ऑस्ट्रेलिया में सिराज में कोई स्ट्रेंथ बची नहीं थी. He was just going through the motions. वो पांचों टेस्ट मैच खेला. I don't think इनकी किसी की भी कैपेबिलिटी है. I didn't see that problem with Stark. I didn't see that problem with Hazelwood. और Hazelwood फिर भी बैठा था. चलो मैं दो बॉलर लेता हूँ, स्टार्क और कमिंस, रनिंग इन from test 1 ball 1 to the last test and the last ball. So that level of fitness, so I don't think Indian bowlers after Zaheer Khan have shown that kind of fitness, including Bumrah, I would say, because the fact that he's injured is because his fitness nahi hai na. In fact, Zaheer Khan की भी ये लेवल की फिटनेस नहीं थी. हाँ, ये लेवल की तो नहीं थी, but one can always say one of the fitter or the fittest from the Indian side, उसी का नाम आएगा. बाकी तो श्रीनाथ ले लो, सब लोग they used to not be able to, 5 दिन तक नहीं सस्टेन कर सकते. श्रीनाथ को मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि उसको रोटेटर का हो गया बॉलिंग डाल के, because he was the only good fast bowler then. इनके तो भी हैं लोग तो भी. Anyway, I think it's a good thing that they have 6 people. And Nitish Shetty also can roll over his arm. And I think actually the key is top bowler का काम कौन करेगा. स्पिन तो वैसे स्पिन तो करवाना है तो जडेजा है, जायसवाल से भी करवा सकते हैं. he's been nets में he's been practicing. So बीच में अगर रिलीफ के लिए चाहिए तो एक दो ओवर्स के लिए you have people. Why Nitish Rana is not there? Has he been dropped? What is it? वो मुझे नहीं पता. I think it's good to get Kuldeep back. He is needed. I don't know how much they're going to play him though, because अगर वो गंभीर का ये रहा है लॉजिक कि मुझे बैटिंग लाइनअप को ज्यादा लंबी करनी है, then maybe Kuldeep will miss out. But I hope he has some role to play in at least 1 or 2 of the tests going forward. But जो मैंने 11 कहा, जो मुझे likely 11 लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है ज्यादा, वो मैंने कहा. Because Abhimanyu Ishwaran is a pure play opener. I don't think, because they want to slot Gill in Virat's place because they want him to succeed. I think they feel that he won't succeed as an opener. Then sadly what will happen is I mean Ishwaran जाके पूरा tour करके आएगा, he might not get a match, or he may get only 1 match or something like that. Yes. Yeah, I mean, Sai Sudarshan doesn't perform and then he also comes, Ishwaran comes 1 down. One of them will have that. Because आपके पास कोई 1 down है नहीं. अब वो जो ऑस्ट्रेलिया में गिल था, आप उसको 2 down कर रहे हो. फिर वही सरफराज खान वाली स्टोरी हो जाएगी, घुमा के लेके आ गए, वापस खिलाया नहीं और फिर ड्रॉप कर दिया. Well, अगर ईश्वरन को मैच ही नहीं खिलाया, which means India is doing well with the 11.
और अगर इंडिया doesn't do well, I think खिलाएंगे उसको. See, on that note, actually, I don't know. Recently, I've been reading it in the news that Sarfaraz Khan lost 10 kilos. वो थोड़ा Yeah. fitness का problem था. That also he did. Despite of that, उसको call नहीं आया. जबकि हमको जरूरत है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की. हम इतने सारे ओपनर्स को लेके जा रहे हैं. So that is one question mark in my head which I Batsman with some flair, some character. वो ना अब मिसिंग है थोड़ा सा. मेरे को बैटिंग लाइनअप में है ना, बारिंग टू सम एक्सटेंट यशस्वी, मेरे को ऐसा फ्लेयर नजर नहीं आ रहा. the Pant is there यार. Of course, Pant is there. तो I mean और कितना flair. See, finally test match is more than flair. It has to be about discipline, technique. I mean it's a 5-day game. 20 ओवर में तो flair हर कोई दिखा देगा यार. क्या फिर ये तो in fact I thought they will take. This is why Shreyas Iyer could have taken the match into the opposition camp. He would have. He can do that, yes. When I meant flair, I meant that कि वो controlled aggression कर सकता था. And I think, in fact, I mean, look, we don't know. Gill may also deliver that because he's a good. I mean, when you look at him, he's a good batsman to look at when he plays his strokes, and he's a beautiful batsman. It's just that he's not performed overseas, and these are not going to be easy, conditions for him to start off. So let's see how he. But I think, like I said, for me, barring Shreyas and barring the fact that captaincy should have been given to Pant, it's a good team. कोई problem नहीं है. I think क्योंकि replace सिर्फ रोहित, विराट और अश्विन हुए. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कुछ नहीं किया था. सभी ने बारिंग विराट सेंचुरी इन दैट वन मैच जब सबने रन मारे थे, कुछ था नहीं. तो आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू मिस एनीथिंग मेजरली इफ आई हैव टू कंपेयर द लास्ट 3 सीरीज व्हिच इज बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो उस हिसाब से स्क्वाड स्ट्रांग है. हाउ द टीम टेक्स टू गिल एज अ लीडर इज द की. यस दो आई डू फील दैट एक चीज पॉसिबली इंप्रूव होगी इज दैट बहुत ड्रेसिंग रूम लीकेजेस आ रहे थे. बहुत लग रहा था कि देयर इज सम काइंड ऑफ एन ईगो बैटल बिटवीन कोच एंड प्लेयर्स. अब आई थिंक वो खत्म हो चुका होगा बिकॉज आई थिंक लाइक समवन सेड दिस इज ट्रूली द स्टार्ट ऑफ द जीजी एरा. अभी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है. अभी बच्चे हैं तो कौन उसको ईगो क्लैश करेगा. ही सीम्स टू बी मोस्ट कंफर्टेबल जब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है. एंड आई थिंक भाई और कुछ नहीं तो वो तो अब नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को फ्रीडम नहीं मिला. अब इससे बेटर क्या मिलेगा. जो चाहिए मिल गया. Maybe that could be one of the reasons why they did not push for Bumrah, or because he's still comparatively a senior player. Gambhir clearly has some discomfort with Rishabh Pant, very clearly. Yeah. I think Gambhir का एक बहुत बड़ा I think इसमें योगदान रहा है गिल के कप्तान बनने में. But let's see. Hopefully, maybe Pant will get a chance to prove himself. Yes. कि भाई ठीक है मेरे को कैप्टन नहीं बना, मैं रन स्कोर करके बताता हूँ तुम लोग को. Yes. वो खुन्नस में कर ले, जिता लेगा मैचेस. Yes. So let's see how it goes, and hopefully at least it'll be a good start. Even if we level the series right now, I'm not very confidently going to go and say कि हम जीत के आएंगे. नहीं, अगर इंडिया 2-1 हारे तो मैं उसको विन समझूंगा. मैं तो लेवल की बात कर रहा हूँ, so I'm more optimistic, I guess. But see, I want a good start to the new WTC. England is with its full team. England is playing Zimbabwe now, so they're also practicing with an international match. Yes. Unlike यहाँ पे जो सब T20 खेल रहे हैं. Ben Stokes also is back. He would be very fresh. काफी समय से ब्रेक लिया हुआ, IPL भी नहीं खेला है. I think they've got all the best players with them. And now India needs to take advantage of the fact that they're also playing them without Anderson, without Broad. So I feel it's been a time since England has moved away from them. But fact ये भी है कि यार England भी 6th थी WTC में. Correct. ठीक है ना. अभी I don't know how much McCallum is going to continue with that approach. It seems he will. और इस करंट अभी जो नए स्क्वाड में अपने वाले में किसने खेला है ब्रॉड और एंडरसन को वैसे भी इतना? पंत. That's it. पंत नहीं खेला है, बस जडेजा ने खेला होगा.
So बाकी तो कोई है नहीं जो, so anyway उनके लिए तो कोई सब एक जैसे ही है, कोई भी आए. Yeah. So let's hope this is the start of a new era. I think काफी it's almost after सचिन के रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा हॉलोनेस नहीं था, because all these people, the Pujaras, the Kohlis, Ashwins were there. So Indian Test team ऐसा नहीं है कि कोई मेजर शिफ्ट हो रहा था. Of course it was like pre Sachin and post Sachin, but ये इस तरह का dramatic change in the Test match team has happened after a long time. ठीक है, let's hope like you said 2-1 से हारे, या like I said, I don't know. No, I'm not saying 2-1 से हारेंगे. I'm saying even if they were to lose 2-1, I would consider it as a win. हाँ, ठीक है. Let's see. Yes. Maybe they'll surprise both of us. Maybe they'll surprise both of us. Yeah. Maybe Gambhir has the last laugh. Yeah. No. If Gambhir has the last laugh, then we will have the last laugh, because उसके बाद हम खुशी होने वाले हैं. हम 100% हम तो खुशी होंगे. Yes. Last laugh हमारा ही होगा. Yes. ठीक है. On that note, let's connect again on this when the series comes, and discuss about the IPL playoffs now that we know who's in the next episode. Next episode, let's do that. Yes. Okay. Now, I mean, all the playoffs के players are चुके, and now there is no chance for. I mean, Gujarat का loss is going to hurt them, because now they might give Mumbai a chance to come up. Yeah, if today's match, if Mumbai and if Bangalore loses, तो फिर sure. Definitely. ठीक है. After that, maybe we'll have a discussion on that. Yes. ठीक है. Okay. Okay. Bye, Vishal. Bye.